एक वक्त में नहीं चल रही होती, लेकिन वो प्लेयर्स बड़े अच्छे होते हैं। तो हमने देखा कि इस स्क्वाड में अब तैयब ताहिर शामिल नहीं है, हालांकि PGL के वो स्टार थे और बड़ा खूबसूरत तरीके से खेलते हैं, जिस तरह से वो टेक्निकली खेलते हैं, बड़े खूबसूरत खिलाड़ी हैं। तो वो इस स्क्वाड में नहीं है। आप क्या समझते हैं कि वो क्या रीज़न थी कि आप लोगों ने उनको स्क्वाड में नहीं रखा, और साथ में इस स्क्वाड में जो गलतियाँ हुई हैं उनको अब आपने कंट्रोल करने के लिए क्या इस कैंप में आपने उनको सिखाया है? अरे देखिए, जो तैयब ताहिर की बात की, जैसे मैंने शुरू में बात की है कि किसी लड़के में पोटेंशियल हो तो उसको ज़रूर देखना चाहिए, और उसको हमने, क्योंकि वो मेरा ख्याल ना 15 में नहीं था बल्कि 25 में भी था मेरा ख्याल है जब मैं आया हूँ। मैं लास्ट मंथ नवंबर मेरा ख्याल है कि 18 को मुझे ये ओहदा दिया गया है। तो मुझे जो मैंने लड़कों को देखा नहीं हुआ था। फिर हमने कैंप लगाया कराची में, उसमें कुछ लड़के जो रह गए थे वहाँ बुलाया, जिसमें तैयब ताहिर को भी बुलाया था। उसका नाम नहीं था 25 में भी, लेकिन वहाँ बुलाया, मुझे अच्छा लगा, टेक्निकल साउंड प्लेयर है। फिर हम उसको लेके भी गए एशिया कप में, लेकिन समहाउ ये लग रहा है कि अभी वो मैचेस के लिए रेडी नहीं है। छोटी एज है उसकी, वो उसकी मेरा ख्याल है कि प्रॉपर एज है, वो जो अंडर 19 वाली एज है वो नहीं है, मुझे उसकी सही एज लग रही। उसके बाद टाइम है, वो आगे क्रिकेट खेल सकता है। तो बाज़ का ये होता है कि आप जल्दी खिला के किसी को ख़त्म ना कर दें, उसका कॉन्फिडेंस ख़राब ना कर दें। मैं ये चाह रहा हूँ कि उसको आगे हम मौका दें, और ऑन एंड ऑफ हम अपनी एकेडमी में बुलाएंगे, और अपने वहाँ रीजन है वहाँ भी वो काम करता रहेगा। कुछ चीज़ें उसको मैंने बताई हैं जिस पे काम करना है, इंशाल्लाह वो उस पर काम करता रहेगा तो बेहतरी आएगी। यूसुफ, पीछे भी है कि आप है? यूसुफ, आपने टीमें भी देख ली वर्ल्ड कप में, जो टीमें हैं, कौन सी ऐसी 2 टीमें हैं जो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती है और जिनके खिलाफ हमें ऑल आउट जाना है? मैं अभी एशिया कप में जो देखी उसमें जाना तो सब पे ही, अब आप देख लें UAE से भी हारे हैं, तो किसी टीम को लाइट ले नहीं सकते, और मेरा नहीं ख्याल लेना भी चाहिए। हमने सारी टीमों के खिलाफ कोशिश करनी है, फुल फाइट करनी है। और जो मेन चीज़ है, जो मैं एग्रेशन जो है, वो जो हमारा 90s में होता था, और जब मैं टीम में आया था, जिन प्लेयर्स के साथ मैं खेला हूँ, उनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा था, वो लड़ते थे अंदर। मेरा TV पे ये कहना सही नहीं है, बहुत सी और भी लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी जो हमारे ख़िलाफ़ भी होती थी जब हम बैटिंग करने अंदर जाते थे, लेकिन हमारी अपनी टीम भी बहुत एग्रेशन दिखाती थी। वो मिस कर रहे हैं हम पूरे पाकिस्तान में। मेरी कोशिश है कि हम एग्रेशन इनके अंदर डालें, चाहे कोई भी सामने टीम है, कोई बैड वर्ड इस्तेमाल ना करें, लेकिन उनकी आंखों में आंखें डालें, और कोई फ्रेंडली माहौल मैं नहीं चाहता ग्राउंड के अंदर किसी के साथ हो। मैच के बाद आप चाहे किसी के साथ गले मिलें, खाना खाएं, जो मर्ज़ी करें, लेकिन वो जो 50 ओवर हमारे 50 उनके हैं, और लंच टाइम भी कोई फ्रेंडली माहौल नहीं होना चाहिए। ये मिस कर रहे हैं हम लोग। ये पहले ऐसे नहीं होता था, इतना फ्रेंडली माहौल जो ग्राउंड में नज़र आ रहा होता आप लोगों को। शायद वो सोशल मीडिया में लोगों को दिखाने के लिए कि हम बड़े अच्छे हैं, हम सब अच्छे हैं, हम पाकिस्तान के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, हमें पहले वो देखना है। बाकी यारी दोस्ती बाद में देखी जाएगी, अभी हमने ग्राउंड में एग्रेशन दिखाना है, उसकी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ लड़कों में वो पैदा हो। यूसुफ भाई, क्वेश्चन आपसे था कि अभी आपने बात की कि प्लेयर्स को हम डेवलप करके बड़ी क्रिकेट की तरफ लेके जाएं। आप कुछ भी लेजेंडरी क्रिकेटर रहे हैं, आप समझते हैं जल्दी डेब्यू हो गया टेस्ट क्रिकेट के अंदर, क्या आप समझते हैं कि सही राइट टाइम पे उनका डेब्यू? देखिए, मैं 21-22 साल का लड़का है, और मेरा ख्याल है कि उसको जो डेब्यू कराया मेरा ख्याल ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अब मसला ये है कि ये नज़र आ गया कि इसमें पोटेंशियल है, इसमें चीज़ें सारी हैं। ये वनडे भी खेल सकता है, T20 भी खेल सकता है, टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकता है। अब ये एक चीज़ नज़र आ गई है। पाकिस्तान अंडर 19 हेलो हेयर एंटी डैंड्रफ शैम्पू प्लस कंडीशनर। इसमें मौजूद मिंट और टी ट्री ऑयल डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प को ट्रीट करें और बालों को रिफ्रेश। मीट द न्यू यू। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। Golden Pearl White Beauty Cream with added super active serum, glutathione, alpha arbutin और niacinamide से डार्क स्पॉट्स गॉन। अब सबको मिलेगा ब्राइट ग्लो मेरे जैसा। Golden Pearl White Beauty Cream, love your skin। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion, एलोवेरा जेल और विटामिन B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे। Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। Golden Pearl Hair Off Hair Removing Cream, Advanced Hair Removing Formula, स्किन पर इचिंग और बर्निंग
नहीं करती। गोल्डन पर्ल हेयर ऑफ हेयर रिमूविंग क्रीम। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। Golden Pearl White Beauty Cream with added super active serum, glutathione, alpha-arbutin और niacinamide से skin extra bright. Golden Pearl White Beauty Cream. Love your skin. रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर कराची से खैबर तक। बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला बोल न्यूज। फासले की हर जंजीर को तोड़ के हम पहुंचे पाकिस्तान के हर सूबे, हर गांव, हर कस्बे, हर गली से जुड़े मसाइल तक। हर खबर खास होगी, हर रंग और उमंग हमारी है पहचान। हमारी सकाफत ही तो है हमारी आन। बने हर पाकिस्तानी की आवाज, देखिए पाकिस्तान का हर रंग। बोल पाकिस्तान, रोजाना शाम 5:03 पर सिर्फ बोल न्यूज पर। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। This half-hourly clock is brought to you by Advanced hair removing formula. Golden Pearl hair off hair removing cream. तहरीक इंसाफ ने बल्ला वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज, दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा, मौक़िफ़ अपनाया। पेशावर हाई कोर्ट ने उजलत में फैसला दिया। केस पहले ही डिवीज़न बेंच के सामने मुकर्रर था। डिवीज़न बेंच से पहले सिंगल बेंच फैसला करने का मिजाज नहीं था। कराची के इलाके सईदाबाद में सीटीडी की कार्रवाई, इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम फौलाद गडानी सखर का रिहायशी और बदनामे ज़बाना सादिक गडानी और शरीफ गडानी का भतीजा है। भाई के हमरा ज़ाती दुश्मनी पर पुलिस एहलकार अकबर गडानी को कत्ल किया। मुलजिम वाक़े के बाद से मफरूर था। और मर्दान में महकमा एक्साइज की कार्रवाई, मनशियात पंजाब स्मगल करने की कोशिश नाकाम। गाड़ी से दौरान तलाशी 84 किलो चरस बरामद कर ली गई। मुलजिम गाड़ी सड़क किनारे छोड़कर रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए फरार। खबर आपको दें, आइंदा हज के नाकाम दरख्वास्त गुजारों को 6 अरब रुपए लौटा दिए गए। ज़राए का बताना है हज कुरानंदाजी में 5,633 दरख्वास्त दहिंदा नाकाम करार पाए थे। रेगुलर हज स्कीम में 69,438 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। रेगुलर कोटे के कुरानंदाजी में 63,805 खुश नसीब मुंतखब हुए थे। अपडेट करना है आपको, आइंदा हज के नाम दरख्वास्त गुजारों को 6 अरब रुपए लौटा दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर से। अली बताइएगा। जी बिल्कुल, वजारत मजहबी अमूर ने बर वक्त इक़दाम किया है, क्योंकि पिछले कई सालों से जो है वो आज़मीन हज जो नाकाम हो जाते थे कुरानंदाजी में, उनको पैसे वापस करने में अक्सर तखीर हो जाती थी। लेकिन इस बार वजारत मजहबी अमूर ने काफ़ी मुतहर्रिक काम किया है और 6 अरब रुपए जो है वो उन आज़मीन को लौटा दिए हैं जिनको कामयाबी नहीं हो सकी। इनकी तादाद 5,633 है और टोटल जो रेगुलर हाई स्कीम थी उसमें 69,438 दरखास्तें मौसूल हुई थी। उनमें से 63,805 जो खुश नसीब थे उनके नाम निकले थे और जो बाकी नाकाम रह गए थे उनको 10,65,000 और 10,75,000 रुपए यानी शुमाली और जनूबी जोन के एतबार से उनको पैसे वापस कर दिए गए और ये टोटल 6 अरब रुपए की रकम है जो आज़मीन हज को वापस लौटा दी गई है। सही, वजारत मजहबी उमूर ने बर वक्त काम किया है। आइंदा हज के नाकाम दरख्वास्त गुजारों को 6 अरब लौटा दिए गए हैं। अली शेर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion, एलोवेरा जेल और विटामिन B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे। Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। स्टार्ट कर
रास्ते घटाने वालों को, पतन चलाने वालों को उसाका बैटरीज का सलाम। आप हैं पाकिस्तान का बैकअप और हर मुश्किल में आपका बैकअप सिर्फ उसाका बैटरीज। गोल्डन पर्ल हेयर ऑफ, हेयर रिमूविंग क्रीम, एडवांस हेयर रिमूविंग फॉर्मूला, स्किन पर इचिंग और बर्निंग नहीं करती। गोल्डन पर्ल हेयर ऑफ, हेयर रिमूविंग क्रीम। वेलकम बैक नाज़रीन। हनीफ अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और कुछ सवालात जो कि ब्रेक के बाद मैं उनसे पूछना चाह रही थी। हनीफ साहब, कुछ लोग साथ साथ हलकों से कह रहे हैं कि कागजात जमा करवा रहे हैं। साइंस क्या होती है, नफ्सियात क्या होती है? मैं नफ्सियात समझना चाहती हूँ एक सियासतदान की, क्योंकि आप हमेशा एक हलके से, ठीक है, तो अगर कोई 6-7 हलकों से कागजात जमा करवाता है तो क्या वजह समझ आती है? अच्छा, मुझे नहीं पता कौन करा रहा है या नहीं। खबरें आ रही है ना, कुछ नाम ले लो, फिर आपकी पार्टी में से भी सुनने में आ रहा है। नहीं, मैं आपके सवाल में रियली काफ़ी है, उसका जवाब भी माशाल्लाह काफ़ी तसल्ली बख्श होगा। ठीक है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि एक तो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, दूसरा एक पार्टी की भी डिमांड होती है। अगर तो पार्टी 7 जगह, तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी ने कभी डिमांड की हो, अपने लिए नहीं डिमांड की होगी। फिर कॉन्फिडेंस लेवल का मसला, दूसरा मसला। मैं एक सेकंड अगर आप मुझे इजाज़त दें तो जी जी। मकसद ये है कि एक तो पार्टी कहती है कि जी आप यहाँ भी करवा दें, यहाँ भी करवा दें, ठीक है, तो पार्टी मैक्सिमम 2 जगह पे कहेगी आपको, ठीक है, ठीक है जी, एक जगह यहाँ करा दें, एक और 6-7 जगहों पे पार्टी नहीं कहेगी। मेरा नहीं क्या, मेरा नहीं। तो फिर उसमें दूसरी वजह क्या होगी? शायद जो आपने पहले बताया, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी। कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पे, कोई भी हो। मैं हूँ ना जी, मुझे, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे कोई एक होता है ना कि किसी चीज़ का ब्रेड एंड बटर होता है, मेरा सियासत ब्रेड एंड बटर नहीं है। मुझे बचपन से शौक था वेलफेयर का, और अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे नवाज शरीफ साहब मिल गए, शहबाज शरीफ साहब मिल गए, एज CM 2 दफ़ा, वो 1 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर मिल गए। मैंने वो काम कर लिए हैं कि मेरे लिए काफ़ी हैं। मेरी मैं समझता हूँ आखिरत के लिए भी अल्लाह ने अगर मुझे कुछ शॉर्टकट में जन्नत में भेजा तो वही इसबाब बनेगा। ये फैसला तो अल्लाह ने करना है, मैंने नहीं करना। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो मखलूक की खिदमत है ना, यानी सियासत को इबादत समझ के करने पे यकीन रखते हैं। अगर ये अल्फाज गलत है तो मैं हनीफ अब्बासी साहब, आपने बड़ा अहम सवाल उठा दिया। सियासत को इबादत कितने सियासतदान समझते हैं? अगर परसेंटेज में मैं पूछूं, बहुत कम। दिल पे हाथ रखिए, नहीं, बहुत कम। कितनी परसेंट? 100 में से कितने परसेंट? बहुत। सुप्रीम कोर्ट में 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली केस की समाअत एक बार फिर शुरू हो चुकी है। Disqualification can only be for the purposes of that nomination paper, and that will end because if the disqualification goes away in the next by-election or in the next general election. That's one argument. The other argument is that the 232(2) cannot be enacted in the light of Samiullah Baloch's judgment, and for that a constitutional amendment is required. And however, all are so far unanimous that we can revisit Samiullah Baloch if we don't find it to accord with the larger constitutional premises. Absolutely. This is and the only reason why this question has been agitating different benches of this court by different judges, but since 2019, but unfortunately it's not been resolved. So since elections are there and every returning, there are, I don't know, thousands of returning officers. One will reject the paper, one will accept it, one will follow 232(2), one will follow Samiullah Baloch. So just wanted to facilitate smooth election. Of course, other objections will be taken, but these, on this matter at least, okay, it's a one-time bar, then he just has to count 5 years past, not 5 years past, simple. So this is, we wanted your assistance on this. Absolutely, I bow to that. My Lord, I bow to that. This actually, your Lordship's order of 11th of December, when I read it, I was reminded of what Chief Justice Marshall confronted in Barbary versus Medicine. He too posed the question that anyone enforcing the law, when faced with 2 norms, one, the Constitution, and one, the law made under the Constitution, what norm is that authority or person or official required to
give effect to. That's the question here also. That the RO, that's how I read your Lordship's order. The ROs have two norms before them, 232.2 and Samiullah Baloch. Which of these two norms is the higher norm which the ROs have to enforce? That's the first thing that my Lord Mike came. I just want to add one thing. No one has attacked, at least so far, 232.2. We are surprised because we expected someone or the other to launch an attack on that. Nobody has attacked it, but you can canvass your proposition on that. My Lord, as I said, I'm in the happy position of not representing anybody, so I don't need to challenge that. But my sense, in my humble submission, that the question of whether Section 232.2 is a valid law will inevitably arise. Because if the question is framed in these terms that I've just set out, let's proceed. That there are two norms. Which of these two norms? Yes. What do you say? The question will arise, my Lord. The question, yes, it is. We agree with you. Chale, aage badhe. So, my Lord, the way I see it, my Lord, the starting point, as I see it, is the sort of historical context for 62(1)(f). That I believe is important. My Lord, pre-18th Amendment, what happened was that pre-18th Amendment, it was settled, and there are judgments. Samiullah Baloch in paras 33 and 34 discusses those judgments, that 62(1)(f) entailed a lifetime disqualification. This was settled before the 18th Amendment. By the 18th Amendment is dated 2010? Well, the 18th Amendment is April 2010. So this is the 18th Amendment. This is one important factor. The only addition that was brought about by the 18th Amendment was by a court of law, if I recollect. Yes. Well, the pre-18th Amendment, the second important factor that your Lordships, in my humble opinion, ought to note, is that there were various provisions in Article 63 which imposed a disqualification but did not lay down any time frame for how long the disqualification would operate. Yes. My Lord, this is 63(1)(g), H, I and J. Now what is the disqualification? My Lord, now these judgments of this court, for example, Shamroz Khan versus Muhammad Amin, PLD 1978, Supreme Court 89. PLD? 1978, Supreme Court 89. The relevant is at 95. Where the principle laid down, and it's very well settled, that if a law has been interpreted in a certain manner by the court, the Parliament then does not change it, but enacts another law or uses the same word in the same sense, then the presumption is that the Parliament wanted the same meaning to continue. In my humble submission, that principle will apply here, that there is a presumption, and it's only a presumption, that since the Parliament was aware that 62(1)(f) had been held by this court to entail a lifetime ban, but it chose not to insert a time limit for the disqualification, the presumption is that the Parliament wanted that duration to continue, subject to the insertion that it has made. This lifetime ban was held by the courts when? Before the 18th Amendment or after the 18th Amendment? Before the 18th Amendment, and those judgments are noted in paras 3 and 34 of Samiullah Baloch. There is the 2007 judgment, there are various judgments from 2009-10. They are mentioned in Samiullah Baloch. And this is something that is discussed. And the point, and what is also important is that could it not be interpreted, you drawing one inference, what about another inference? The other inference is that 63(1)(g)(h)(i)(j) prescribed periods, and in this 62(1)(f) period was not prescribed. So the period is, as Mr. Usman had mentioned, only for that particular nomination paper. Why can't we draw that inference? But because that is not what this court had held prior to the 18th Amendment. Where did it hold? Starting from 2007. कोई case बताए ना? This is mentioned, my Lord. This is it mentioned in Samiullah Baloch. For example, 2007 Supreme Court. This is what is quoted there. 2007 Supreme Court.
PLD 2007 Supreme Court 369. Imtiaz Ahmad Lali versus Ghulam Muhammad Lali. This declaration part was interpreted in 1985. Hello? ये जो 62(1)F की अमेंडमेंट पहली दफा कब हुई है? 62(1)F की तो अब वो पहले भी होती रही है, हुई है ना? पहले भी होती रही है, बट ये जो डिक्लेरेशन ऑफ लॉ वाला वो अब आया 18th अमेंडमेंट में आई है ना जी, ये 18th अमेंडमेंट 2010 में, अप्रैल 2010। आप जजमेंट्स दे रहे हैं हमसे उससे पहले की। मैं ये कह रहा हूँ जी कि उस 18th अमेंडमेंट जब पार्लियामेंट इनैक्ट करने बैठी तो Parliament is presumed to know the state of case law. That's a presumption. They knew that 62(1)F has been interpreted in this manner. They knew that there is a presumption. They consciously made changes in various articles of 63, but did not make changes. Where are you getting this presumption from? Well, this is settled. Judges don't know sometimes what the law, early judgments are, and the parliamentarians are expected to know what the judgments are. But your lordship is wearing all the laws of the country on the sleeves of your lordship's robes. Oh, that's I don't profess that. That's the law. ये जरा क्लियर कर दें कि 2010 से पहले what was the language? 2010 से पहले 60. Because those judgments that you're relying on, उसमें life की बात. He is sagacious, righteous, and non-profligate and honest and mean. That's it. That's it. And this was interpreted to be a lifetime ban. This was interpreted to be a lifetime ban. देखिए एक चीज है ना. There's another, Khurram Saab has drawn a distinction between 62 and 63. And 62 is the entry gate, according to him. So this entry gate does not open to you if you're not honest, sagacious, non-profligate, mean, etc. Right? Now, where is this entry gate may suddenly open? Because now you are honest, sagacious, non-profligate. I mean, so it's not a permanent shutting off date. Like, so this is again called judge-made law. This is again judge-made law. It is, and your lordships are free to revisit it. And I will be submitting that there are aspects of Samiullah Baloch which need to be revisited. But my submission is that clear कर दे. Samiullah Baloch proceeds on the assumption that there is a disqualification by a court, and unless the disqualification is set aside, it continues. Prior to this, जो judgments थी, what was the rationale in those judgments for a lifetime ban? That simply because the Constitution read one of them. Did not. हम आपके साथ पढ़ना चाहते हैं. जी, if I can just answer.